Good morning, everyone. A very warm welcome to each and every one of you present in today's science class of 5th standard. Okay, so since as we have this is our fourth class of this part, that is states of matter, that is going to be your module 4 here. So before going ahead with our chapter, again I would like to request you that please take care of all the necessary precautions, and so that you as well as your family do not get into any kind of trouble. And at the same time, another thing which I would like to tell you is that please try to start using turmeric in your milk in the night. Okay, this is going to increase your immunity power as well. Okay, just in the night when you are going to have your milk, just add a little amount of turmeric into it, so that because turmeric has antioxidant property, so it not only filters or removes waste from your body, toxic substances from your body, but it also makes the blood and everything cleaner, and at the same time it increases the immunity. Thereby we will be able to fight with COVID-19 in a much more better way, not only with this COVID-19 but also with some other viruses which may be present in our environment. Okay, so let us start with today's topic. What I remember is that till yesterday I told you about the arrangement of the particles in solid, liquid as well as gas. Okay, so let me give you a just quick recapitulation of what we have done. So basically, if you remember, we discussed about the processes which are taking place: solid to liquid melting, liquid to gas evaporation, gas to liquid condensation, and liquid to solid freezing. Okay, then we talked about the things which are present around us. Each and everything is made up of matter only, and since matter, the amount of matter present in a thing makes up its mass. So basically, each and every object which has mass as well as it occupies some space, that is said to be a matter. And basically the space covered by that object or by that matter is basically referring to the volume, which I have told you how to calculate it. Okay, next we also did this is the complete definition, that is matter is anything that has mass and occupies space. Then I told you what is matter made up of: atoms which combine together to form molecules. Then these molecules again they have two characteristics: intermolecular space and your intermolecular forces of attraction. Okay, so on the basis of these two things, intermolecular force of attraction and intermolecular spaces, we distinguished or defined the three different types of matter, that was your solid, liquid or gas. Okay, in the case of solid, what we know that the particles are very closely packed, intermolecular spaces are absent or minimum, and the intermolecular forces of attraction, they are maximum. So now if you remember, yesterday only I told you that there is just inverse relationship or just opposite relationship between the intermolecular spaces and the intermolecular force of attraction. That is, if the intermolecular spaces are very less, ठीक है, space कम रहेगा तो force of attraction ज़्यादा, and if the space will be more, so the intermolecular force of attraction will be less. Okay, so just opposite of that. If we move ahead, so here what we are going to see, that is solids. Basically in the case of solids, I told you, and since their arrangements are quite tight, the molecules are not able to move and they keep on vibrating at their own positions, and at the same time, due to this rigid packed structure, they give a definite shape and volume to the objects or to the matter. In the case of liquids, intermolecular spaces are more and your intermolecular forces of attraction is less than solids. Okay, so just because of these two things, the liquids, they occupy the shape of the container in whichever they are poured, because these liquids, as the molecules can move from one place to another through a small distance, so therefore the shape of the liquids does not remains constant and it automatically occupies the shape of the container. If you remember, with this I told you also that this activity, that is, take a glass of water and slowly add 2 spoons of milk into it. Do not stir, leave the glass undisturbed for 30 minutes. What do you observe?
that your entire water becomes milky. So I told you how this is becoming milky, okay? And this is telling us that is liquids take the shape of the container. The amount of liquid is same, that is 180 ml, but it is occupying the shape of the flask, of the cylinder or jar, as well as of the conical flask, okay? Next, if we move ahead, in the case of liquids, gases, the molecules are very far away from each other, so the intermolecular forces of attraction is also minimum. And since the intermolecular force of attraction is minimum, that is very weak, therefore they cannot be kept in an open container. They fill the entire space in a closed container, and that is why gases have no fixed shape or volume. अब इसको मतलब समझिए इस चीज को, ठीक है? वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम आई टोल्ड यू लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ओके? First try to understand with this part, okay, and what I was telling. Volume here, okay? Gases does not have fixed volume, okay? Why it does not have a fixed volume, okay? अब देखिए होता क्या है, volume क्या है? Length, breadth and height. All of you know this thing now, okay? So if you take the example of your deodorant or the perfumes which you apply on your clothes at the time of going to the markets or coming to the school, or whenever you are going somewhere out in the parties, you used to wear those fancy dresses along with applying of your perfumes or deodorants. So what happens? The deodorants, you know that it is compressed form, and as soon as you press it, gases comes out, okay? But when you shake the bottle of the container, what do you find? That liquid kind of thing appears, or you sense that liquid is filled inside. But the moment you press the knob, immediately the gas comes out, ठीक है? यही ना होता है परफ्यूम्स में या डिओड्रेंट्स में, क्या होता है, ठीक है? Gases comes out basically, okay? But when you shake the container, you feel that liquid is present in it. So the basic concept is here only, okay? अब इसको मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आपको 9th क्लास में पढ़ना और अभी समझ में भी नहीं आएगा आपको, ठीक है? तो बेसिक कंसेप्ट बस इतना जानिए कि लिक्विड्स गैसेस को हमने क्या किया है, कंप्रेस कर दिया है। कंप्रेस किया है मतलब उसको पास करके हम एक बॉटल में फिल करके आपको सेल कर दिए या मार्केट्स में इंट्रोड्यूस कर दिए। द सेम कंसेप्ट इज ऑफ द गैसेस ऑल्सो, ठीक है? सिलेंडर्स में गैस भरे जाते हैं, ठीक है? 14 to 15 kg ऑफ गैसेस दे आर बीइंग फिल्ड, बट तो क्या होता है, 14 से 15 किलो गैस क्या करता है, वो छोटे से सिलेंडर, ठीक है, 2 फीट 4 फीट का जो सिलेंडर है, उसके अंदर पूरी की पूरी गैस को पैक कर दिया जाता है, और जैसे ही आप नॉब ओपन करते हो तो तुरंत गैस बाहर निकलने लगती है, ठीक है? तो जब आप अगर देखें वही 14.5 किलोग्राम्स और 14 किलोग्राम्स ऑफ गैस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर, तो उसका वॉल्यूम कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि दैट इज प्रेजेंट इनसाइड दैट सिलेंडर। तो आप सिलेंडर का लेंथ, ब्रेथ, हाइट नाप करके आप उसका वॉल्यूम निकाल लोगे, ओके? बट इफ यू ओपन द नॉब एंड दैट एंटायर 14 किलोग्राम्स ऑफ गैस, ओके, गोज इनटू द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट का तो आप लेंथ, ब्रेथ, हाइट नाप नहीं सकते हैं, okay? So since you cannot do this thing, therefore it is very difficult for you to calculate the volume of the gases, ठीक है? सिलेंडर में था तो कुछ और था, बॉटल में आप कर दीजिए और कंप्रेस करके तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है? एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे तो कुछ और ही वॉल्यूम हो जाएगा, बिकॉज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दे कीप ऑन चेंजिंग. That is why we cannot that is why we say that is the gases do not have fixed shape or volume, ठीक है? अब एक्टिविटी इसका क्या है? एक्टिविटी एग्जैक्टली सिमिलर है जैसे मैंने आपको कल बताया था कि दैट वन, मिल्क एंड द वाटर, ठीक है? वाटर हैज अ लॉट ऑफ स्पेस इन बिटवीन देम, द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दे हैव स्पेस इन बिटवीन देम, एंड व्हेन यू पुट 2 spoons of milk into it, each and every molecules of milk they get occupied in between the spaces of the water molecules. Water molecules के बीच में जितनी भी जगह होती हैं उन सब को कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? मिल्क के मॉलिक्यूल्स कर लेते हैं, और इसी वजह से पूरा का पूरा वाटर आपका मिल्की हो जाता है. अब इसी तरीके से समझने की कोशिश करिए. ये आपका this one, next activity, that is this one. In the case of gases, this one. Light an incense stick in one corner of your room. After few minutes, you are able to smell it in the other corners of the room too. Why? The stick releases scented smoke on burning. The molecules of smoke soon fill the entire room. यहाँ पे भी कंसेप्ट वही है, ठीक है? कैसे वही है? आइए मैं एक बार और आपको आज ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है? क्या सीन था उसका?
So suppose if I take a rectangular room here, because rooms वगैरह generally rectangular ही होते हैं, ठीक है, हम इसको और छोटा ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, नहीं तो भरने में टाइम लगेगा. ओके, suppose this is the room here and now I told you that let us take the molecules of air. ये आपके क्या है, molecules of air है, खूब बड़े बड़े. क्योंकि रूम की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर रहेंगे. इज दैट क्लियर? ठीक. नाउ okay, these are the molecules of air present in a particular room. Now suppose this is the corner. ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हो, या तो आप कोई इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती जला दीजिए, या फिर इस कॉर्नर रूम में आप क्या कर दीजिए, हल्का सा स्प्रे कर दीजिए, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ कर दीजिए जो कि आपका क्या हो रहा है, सेंटेड रहे. क्यों? क्योंकि आप एयर को देख नहीं सकते हैं, लेकिन आप उसको स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. ओके, so when it will be scented, so you will be able to identify it very quickly. okay, तो चलिए हम क्या करेंगे, आप किसी भी कॉर्नर में फर्स्ट A B C D आप कहीं भी, अगर मान लीजिए हम लोग इसकी लेबलिंग कर देते हैं, सपोज ओके, सपोज दिस इज योर A here. okay, A corner, then B corner here. okay, then here C corner and then D corner. okay, so these are the basically 4 corners which are present of the room. now you take any one corner whichever you feel like. ठीक है, आप कोई भी कॉर्नर ले लीजिए, चाहे A ले लीजिए, B ले लीजिए, C ले लीजिए या D ले लीजिए, जो आपका मन करे, और आप उस कॉर्नर पे उस सेंटेड सब्सटेंस को, चाहे वो इंसेंस स्टिक हो, परफ्यूम हो, डिओड्रेंट हो, कुछ भी, ठीक है, आप उसको वहाँ पे हल्का सा स्प्रे कर दीजिए, हल्का सा, और फिर आप बंद कर दीजिए उसको. ओके, और लीव इट फॉर सम टाइम. सो व्हाट यू विल फाइंड, सपोज इफ आई एम मेकिंग द स्ट्रक्चर्स, okay, I have taken here the diamond shaped. So if I suppose this diamond shape is representing the molecules of the परफ्यूम और इंसेंस स्टिक. ओके, चलिए वो भी पहले हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं यहाँ पे. सपोज दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ, ओके, these are what, these are the molecules of air. okay, air molecules. And secondly, if we take the another molecule which we have taken, that is this one. so this is actually what, this is the perfume molecule. okay, so these are the perfume molecules. okay, now just try to see here, that is in one of the corners. आप किसी भी एक कॉर्नर में क्या करते हैं, इस परफ्यूम को क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं, और डिओड्रेंट और इंसेंस स्टिक आप कुछ भी ले सकते हो जो आपका मन करे. ओके, सो द मोमेंट यू पुट it here or spray it here and you leave it for some time, within seconds or within few minutes you'll be able to find that if you, अगर आप यहाँ पे करके आप दूसरे कॉर्नर पे चले जाइए, suppose now you are present here and you are just waiting for it, so what you will find that all these molecules, they will immediately start spreading among themselves and they will occupy the entire container, and as a result of which, or room, and as a result of which the smell will keep on spreading from one place to another, and as a result of which the place where you are present, there also the perfume smell will start coming. okay,
Is that clear? So in this way what happens, wherever the spaces are present, okay, the molecules of the perfume will be getting occupied and your entire room will become scented or will get the fragrance of that perfume or deo, whichever things you have taken. Okay, so got my point? So in this way what happens is slowly and slowly from this direction, that is, if you can see here, so from here which you have taken, that is you put the spray at D position, and from the D it has started and it has reached to A where you were present. Okay, so how quickly this happens, this depends on the size of the room and the amount of particles which you have sprayed here, the molecules which are present here. Okay, so since air is there and the particles or the molecules of air, they are very much far away from each other, and since they are very much far away from each other, so what will happen, the spaces, lots of spaces are present in between them, and these perfume particles or incense stick will keep on traveling from one place to another. Finally they get extinguished. Is that clear? So this is how the thing happens or it occurs in the case of the gases. Is that clear? Now let us move ahead with some more parts. Okay, change of states. Change of states when we are talking about, okay, so first and the foremost thing, you try to understand this thing, that is only two things are responsible for changing your state, either heating or cooling. Remember, okay, whether solid is getting converted into liquid, liquid is getting converted into gas, or gas into liquid, liquid into solid, कुछ भी कन्वर्जन आप देख लीजिए, ठीक है, इन सब केसेस में आपको खाली दो चीजें कॉमन मिलेंगी, दैट इज योर हीटिंग एंड कूलिंग. ओके, या तो आप किसी सब्सटेंस को हीट करके आप उसका स्टेट चेंज कर दोगे, ठीक है, या तो आप उसको कूल करके उसका स्टेट आप चेंज कर दोगे. सो ओनली दीज टू आर द मेथड्स बाय विच यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. Is that clear? So now let us go ahead with this and see where, at which places we are heating and at which places we are cooling it. Okay, let us see here. Okay, so in the case of here, how you have already seen how water changes into water vapor on heating and to ice on cooling. Matter can change from one state to another when it is heated or cooled. I told you just now, the following are the different changes of state that can occur in matter when we are talking about melting. So melting, हिंदी में भी आप जानते हो कि melting का मतलब basically होता है पिघलना. Okay, so whenever a solid is heated, it melts to form a liquid. Have you tried putting butter on a hot toast? What happens to it? It melts. Similarly, if you leave ice cream outside the freezer for some time, it melts. The process by which a solid changes into liquid on heating is called melting. Remember this definition. These are the important ones. That is the process by which a solid changes into liquid. Solid is getting converted into liquid, and what is happening whenever the solid gets converted into liquid, तो हम क्या बोलते हैं, मेल्ट हो रहा है. आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, सॉलिड चीज मेल्ट हो रहा है. और कब मेल्ट होगा, जब तक हम उसको हीट नहीं करेंगे. अब देखिए यहाँ पे हीट करने हैं, ठीक है, हम बोलते हैं ना अनलेस एंड अनटिल यू हीट इट. तो आइसक्रीम को तो आपने हीट किया नहीं, फिर कैसे हो गया, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कुछ लोगों के बारे में. जो जानते हैं वेरी गुड, जो नहीं जानते हैं प्लीज ट्राई टू थिंक अबाउट इट एंड आई एम टेलिंग यू द आंसर फॉर दिस. ठीक है, कि आइसक्रीम को तो हमने हीट नहीं किया, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि मेल्ट्स, वो तो समझ में आ रहा है, ठीक है, कि हाँ आइसक्रीम मेल्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, बट हीट तो हमने किया ही नहीं. ठीक है, तो होता क्या है कि सिंस your ice cream is very much cold enough and the temperature of outside is very hot enough, so from higher concentration to lower concentration या from hotter end to cooler end. ठीक है, हमेशा आप क्या देखते हो कि एनर्जी जब भी फ्लो करेगी तो फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड ही फ्लो करेगी, कोल्ड से हॉट में जल्दी नहीं जाता. ओके, सो जनरली व्हाट इज हैपनिंग हियर, दैट इज कोल्ड से हॉट में, मतलब आइसक्रीम आपका कोल्ड था, अब क्या होगा, वो एनवायरनमेंट के हीट को एब्जॉर्ब करने लगेगा अपने आप, क्योंकि वो उसी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, आप उसको हीट करने की ज़रूरत ही नहीं है. ओके, इट कीप्स ऑन एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स environment and it starts melting, and as a result what happens, you find that your ice cream starts melting and it gets converted into liquid. So heat करने का मतलब ये, या आप लोग भी याद रखिएगा कि कोई ज़रूरी नहीं कि हम गैस पे रखें, फ्लेम पे रखें, कैंडल जला करके हीट करें या कुछ भी हम करें.
ठीक है, यही हीट करना नहीं होता। ठीक है, अभी जैसे मुझे स्वेटिंग हो रही है, तो स्वेटिंग कब होती है? जब गर्मी लगती है। गर्मी का मतलब हीट होना। ठीक है, तो मुझे कोई हीट थोड़ी ना कर रहा है, बट द एनवायरमेंट इज देयर विच इज मेकिंग अस स्वेट, विच इज मेकिंग अस फील हॉट। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ हीटिंग। डायरेक्टली भी है, वो ऐसे भी केसेस हैं, इनडायरेक्टली केसेस भी हैं। ओके, नाउ लेट अस go ahead, but first let me share the screen to you. Okay, so here it is, this one. When solids are heated, the molecules start vibrating faster. They are able to overcome the strong force of attraction between themselves. They start moving around. This is how solid change into liquid. अब ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, वही सेम चीज़ें होती हैं। ठीक है, हर चेंज ऑफ स्टेट में यही होगा। ठीक है, पहले टाइम देख लेते हैं। टाइम है, चलिए आपको लाइब्रेरी में मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, अ न्यू वन। ओके, फर्स्ट आई विल हैव टू क्लोज इट। यस, ओके। आपको समझाना था कि कैसे ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। चलिए हम ले लेते हैं ये सॉलिड छोटा सा। ठीक, solid के molecules, all of you know that they are very much tightly packed. ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम। Okay, so suppose this is the solid here. Okay, and these are the molecules which are present in the solid. So since you can see that the arrangement is very tightly packed. ठीक है, तो जब हम इसको हीट करेंगे, that is when we are trying to heat it, so what you will find is that जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, ठीक है, so what you are going to do now is you are going to heat it. We are going to heat this one. Now see, heat can be provided in any way. आप फ्लेम जला के, कैंडल जला के, कुछ भी जला करके आप क्या करिए, इसको हीट कर दीजिए। जैसे ही आप हीट करोगे तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी गेन कर लेते हैं, क्योंकि ये गर्म हो जाते हैं, और गर्म जैसे ही होते हैं तो दे स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द हीट एनर्जी, और जब ये हीट एनर्जी को और एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग वेरी फास्टली। ये अपनी जगह पे बहुत तेज़ी से हिलने लगते हैं। ओके, इन द सेम वे ऑल ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग वेरी क्विकली, ओके, इन अ मच मोर फास्टर वे एज कम्पेयर टू द नॉर्मल। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सॉलिड्स में, ठीक है, पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते हैं और वो अपनी जगह पे ही क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे जब एनर्जी गेन कर लेंगे तो वो और तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे। ओके, एंड सिंस दे आर गोइंग टू वाइब्रेट इन अ मच मोर बेटर वे, ओके, सो एक ऐसा टाइम आएगा कि जब, जैसे मैं आपको ये दोनों मॉलिक्यूल्स का लेकर के एग्जांपल बता रहा हूँ कि दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग इन सच अ मैनर कि एक ऐसा टाइम आएगा कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ करके, और यहाँ पे सॉरी ओके,
ये मॉलिक्यूल्स अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ करके जो एकदम पास पास हैं वो यहाँ पे आपको दूर दूर हो जाएंगे इन दिस वे। ठीक है, मैं इन दोनों को अलग करके दिखा दिया हूँ आपको। ओके, तो आप क्या देखते हो कि ये जो मॉलिक्यूल्स पास पास में थे, हीट करने की वजह से क्या हुआ, उन्होंने एनर्जी गेन किया। एनर्जी गेन करके क्या होगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे बहुत तेज़ी से। एंड अ टाइम विल कम, एक ऐसा टाइम आएगा, जैसे आप होता है ना कि आप रबड़ को बहुत ज़्यादा खींचते हैं तो एक ऐसा टाइम आता है कि टूट जाता है, धागा टूट जाता है, आप खींचते रहते हो। तो इन द सेम वे हियर ऑल्सो हैपन्स कि वाइब्रेट करते करते एक ऐसा टाइम आ जाता है कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं और वो दूर दूर हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ओके, एंड व्हेन दे गेट सेपरेटेड, तो अगर आप इसको खाली देखिए, ये जो है, ठीक है, खाली ये पोर्शन जो यहाँ पर है, जो अभी नया बना है, इसको अगर आप देखें तो आप इसमें क्या देखते हो कि लीव दिस वन। ठीक है, आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स किस में अरेंज होते हैं, लिक्विड में अरेंज होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम हीट करेंगे तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग विच अकर्स इज दैट इज, ठीक है, यहाँ पे कई चीज़ें होंगी, कई चीज़ों में क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, हीट करने पे दे विल गेन सम एनर्जी, energy is gained by the molecules, okay, and when energy is gained by the molecules, तो इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद एक और चीज हो जाएगी, वो क्या होगा कि let me take the keyboard, okay, after gaining the energy the molecules start vibrating very fast, okay, and when the molecules start vibrating very fast, तो इससे क्या होगा, क्या होगा बताइए, बोलिए, okay, what will happen, the intermolecular forces of attraction, they get broken, okay, and when the intermolecular forces of attraction gets broken, तो इसके वजह से फिर क्या एक चीज हो जाएगी कि the molecules will get separated, ठीक है, the molecules they get separated, and when the molecules get separated, they get, here only the basic meaning is that they get converted into liquid, okay, this is the meaning that the molecules they get separated, that is they get converted into liquid, or they take the shape of the liquids. So in this way the solid gets converted into liquid. Is that clear? So now here what you are going to get is that when you will see here, okay, this part, so here you will be able to observe something in this way, that is the molecules which are present, they will be present in this way, that is far away from each other, जो बहुत पास पास में आपको दिखाई दे रहे थे, they will be very far away from each other, that is they get, since they have got converted into liquid. ये समझ में आ गया आप लोग को? Okay, so in this way solid gets converted into liquid, and in the same way liquid gets converted into gas. ठीक है, जैसे लिक्विड में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस इतना होगा, फिर जब हीट करेंगे ये और तेजी से अपने आप की मूवमेंट करने लगेंगे और इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर से टूट जाएगा और वीक हो जाएगा, एंड फाइनली दे विल गेट मोर मच सेपरेटेड एंड they will get converted into gas. So this is how the actual process occurs of
द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। ठीक है, एक ही में मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है अलग अलग करके। मेल्टिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ओके, ये चीज़ मैंने आपको समझा ही दिया कैसे होता है। ओवरकम का मतलब वही है, दे आर एबल टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अगर ये समझ लीजिए, आपको मैं इसको इस तरीके से सॉरी आपको मैंने स्क्रीन नहीं दिखाया, यहाँ पे देखिए, okay, here there is a line here that is this they are able to overcome the force of attraction between themselves। अब overcome the force of attraction का मतलब क्या है वो समझिए। suppose these two are the molecules which have force of attraction in between them, लेकिन जब आप इसको हीट करें, ठीक है, तो क्या हो गया, ये धीरे धीरे लूज होते 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 गेन कर मतलब एनर्जी गेन करते करते और इसके वाइब्रेशंस तेज होते रहेंगे, और वाइब्रेशन तेज होते 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 वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। Okay, so in this way it happens whether it is from solid to liquid or liquid to gas, okay, whatever may be the situations. So this is all for today. What else we have here is, that is basically your evaporation and condensation, then you have freezing and changes are also there, okay. It will require at least 2 more classes, okay. So that's all for today. Have a great day ahead, and please don't forget to take all the necessary precautions. Is that clear? So that's all for today. Thank you and have a great day ahead.